Hey guys, welcome to my channel. My name is Astha Sharma and I'm a registered pharmacist. In this video, I'm gonna share my experience of dopamine detox. So if you're interested, please watch this video till the end. डोपामाइन डिटॉक्स आपका सोशल मीडिया डिटॉक्स के जैसा नहीं होता। सोशल मीडिया डिटॉक्स में सिर्फ अपना सोशल मीडिया को आप साइड में रखते हो, लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर इट इज, सो आप उसको साइड में रखते हो। बट डोपामाइन डिटॉक्स में आप प्लेजरेबल एक्टिविटीज को साइड में रखते हो, ऑक्यूपेशन को साइड में रखते हो। डोपामाइन एक केमिकल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट व्हाट आई फील इज अगर आप कोई भी एक्टिविटी करने से आपको एक दिन का रिलैक्स, काम, पीस फील होता है, so why not? So that's what I did. I wanted to perform this experiment of dopamine detox and I did. Yeah, I'm back. It's 12 o'clock and I am gonna stay on liquids. So yes, just water, maybe tea, maybe coffee, but yes, liquid, no food for 24 hours and dopamine detox. So yes, I'm gonna stay away from the technology. Yes, I have to use this phone क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा या कुछ नहीं है. I just use my phone to record things. तो मैं फ़ोन यूज़ करूँगी. और yes, no music, no technology. कुछ भी ऐसा नहीं जिससे मुझे pleasure feel हो. Nothing like that. As it I have nothing to do, I can jot down things I'm grateful for. So मैं अभी ग्रेटफुल जिन चीज़ों के लिए हूँ वो मैं इस वीडियो में बोलूँगी एंड लेटर आई विल जॉट डाउन दैम. ओके, टिल नाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर द टी आई एम हैविंग. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस आइडिया of dopamine detox and I am able to take out a day to reset my mind. Grateful that I'm coming with this idea and you're gonna watch it and maybe in some way or the other way you're gonna apply this idea. And yes, now I'm gonna observe the nature. And it's 1 o'clock. I have still nothing to do. I'm gonna jot down things that I'm really grateful for. As of now, I have nothing, but I am grateful to this little furry ball. And till now, what I can say is it's a really good practice that you are alone with your thoughts. You're alone with your mind. So now you have time to observe things. You have time to observe your thoughts. What you feel you can jot down, what your plans and goals, you can jot down them. I mean, for me also it is quite difficult to jot down things I am grateful for and thankful for, because जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी छोटी चीज़ें आप नोटिस करते हो. अभी पैंडेमिक है, पैंडेमिक में कितने सारे मज़दूर जो जा रहे थे उनकी डेथ हो गई. वो गर्मी में धूप में चल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं है. दे आर सफरिंग अ लॉट, राइट? और वी ऑन द अदर हैंड वी आर स्टेइंग इनसाइड, ट्राइंग डिफरेंट रेसिपीज, चेजिंग डोमिनोज, brownies, banana breads and so on. We are doing everything, every possible thing. So yes, it's really difficult because you do not have peace the way you want, but still I will try my best to meditate as much as I can. So literally मैंने 5 मिनट 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं किया, but today this is the opportunity for me to meditate as much as I can because I have nothing to do. So why not? Let's try meditation as much as I can. that I'm gonna stay on liquids, so yes, मैं बहुत सारा पानी पीऊँगी आज पूरे दिन. And yes, that's the another way to detox. So
this is 5:30 p.m. and what I did till now, I had my tea, did meditation. Apart from that, I struggled a lot with my thoughts. When you sit alone, you have nothing to do. You are bombarded with so many thoughts, and that's what happened with me. Thoughts related to past, for the future, present, about this video, and so. The good thing was I am able to observe things very closely, like detailed observation. I am observing the insects around me, I am observing the plants, I am observing how I move my body. And it is really difficult to control your thoughts, but I have one activity that I was performing till now when I was struggling a lot with my thoughts. So what you can do is you can have a rubber band like this or handband like this. Just switch this rubber band from one hand to another. Keep practicing one hand to another, and this is like actually आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो और आप इतना स्ट्रगल नहीं करते हो अपने thoughts से. So do let me know if you are struggling a lot with your thoughts, then practice this habit. So this is 7:30 p.m. and I am still not using any technology. Of course, I'm not doing anything that's gonna please my brain. It's 8 o'clock and still not dark. Time. This is almost 9:30 p.m. and I'm able to achieve my goal, that is dopamine detox. So yes, I'm able to complete my challenge. I'll record the conclusion for you. Till now what I noticed, I was present, whatever I was doing, maybe meditation, maybe whatever I was doing, maybe walk, terrace walk or something like that, whatever I was doing, I was present in that moment. And when I was lost, then breathing, inhale, exhale, it helped me a lot because breathing brings you back to the moment. So yes, breathing, inhale, exhale, maybe box breathing. I made a video on that, so you can watch that video. I'll leave the link in the description box also. So I'm feeling fresh, not tired at all, and this is 10 p.m. so I'm able to complete this detox. 30 and 11:30 p.m. I'm feeling great. I am grateful to the universe and the people. अगर वो लोग support नहीं करते तो मेरा dopamine challenge बीच में रुक जाता. मेरा फ़ोन पूरे दिन flight mode पे था. मैंने laptop फ़ोन नहीं यूज़ किया, music नहीं सुना, मैंने meditate किया बहुत ज़्यादा, and मैं walk पे गई और yes, it was just like full day अपने thoughts के साथ अकेले ऑब्जर्व करना, चीज़ें लिखना एक सिंपल पेपर पे अपनी जर्नल, और बस आप और आपके थॉट्स, उसके अलावा कुछ नहीं. सो इट वाज गुड. आई वाज प्रेजेंट इन द मोमेंट. और जैसे ही मैं लॉस्ट थी थॉट में, तो द प्रैक्टिस ऑफ रबर बैंड, हैंड बैंड और breathing technique, breathing brings you back to the present moment and I was feeling great. So I am feeling great. अभी मैं वॉक पे गई थी तो इसलिए मैंने आकर I took bath because it's not safe, you know, COVID is all out there. So yes, mask पहना. I would like to conclude my dopamine detox experience. First of all, detailed observation. आप कोई भी मोमेंट में होते हो, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो. आप किसी से बात कर रहे हो तो वो ढंग से समझ पा रहे हो. योर माइंड इज नॉट हेयर एंड देयर, यू नो, इट इज प्रेजेंट. आप ऑब्जर्व कर पाते हो चीज़ों को. सेकेंडली, आई वॉज ऑन लिक्विड फास्ट था. सो येस, आई वॉज फीलिंग फ्रेश एंड लाइट till 10-11 p.m. सो दिस वॉज रियली गुड, लाइट. और बहुत अच्छे से आई एम रिकॉर्डिंग माई कंक्लूजन नेक्स्ट डे. सो बहुत अच्छे से मेरी नींद हुई, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ और अगले दिन मैं फ्रेश उठी. ऑल्सो व्हाट आई फेल्ट, आप डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मोमेंट में प्रेजेंट होते हो. और लास्ट कंक्लूजन व्हाट आई फेल्ट इज डोपामिन डिटॉक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. आपको कम से कम चीज़ों में कितनी खुशी मिल सकती है वो इस प्रैक्टिस से आपको पता पड़ता है, और आप कितना काम, कितना रिलैक्स, कितना हैप्पी फील करते हो. सो येस, अगर आप
कभी भी ट्राई करोगे डोपामीन डिटॉक्स, so do let me know in the comment section below. I would love to listen your experience about dopamine detox or social media detox. So yes, that is amazing. That was a great experience. And yeah, that's it. Thank you so much for watching my videos, supporting my content and my videos. Give this video a thumbs up. Please subscribe to my channel if you haven't subscribed my channel yet, and comment down below your experience about any day whenever you perform social media detox or dopamine detox, or you want to perform this activity. Do let me know in the comment section below, because I would love to know for it. Thank you. Bye bye.